Good afternoon, students. As you all know, in previous sessions, we have already learned about many topics, many tools, and even all about LDD. Or even we will learn how to create structures through LDD. Even we can also learn how to create educator vehicle. That means today we will learn how to create educator vehicle through LDD, right? As you can see in front of you, one image is here. This is educator vehicle. So today we will prepare this robotic structure. You can see here, हम ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं और आज हम बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि हम इसको एक ही लेक्चर में वाइंड अप कर लेंगे. सो वी विल डिवाइड this structure into various parts. Okay, ये जो structure है इसको हम अपने parts पे divide कर लेंगे. Like today we will create the base of this structure, and after that we will design the other side of this structure, and in next class we will design the upper part of this structure. उसी में हम उसको assemble करते जाएंगे, but हम उसको division में work करेंगे, right? एट द एंड हम कंप्लीट स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेंगे जो हमारे सामने है, राइट? अब हम बात करेंगे कि इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को बनाने की क्या जरूरत है. Why we use that kind of structures? Why we prepare that kind of structures? Right? Because by the help of these structures we can easily perform any task. Like this machine can run, this machine can turn, this machine can rotate, right? It means ये machine चल सकती है, move कर सकती है, turn ले सकती है, rotate move कर सकती है, round turn कर सकती है. तो आप कोई भी टास्क इस मशीन से प्रिपेयर कर सकते हैं, करा सकते हैं. But before that you have to design this, right? It means अभी तक आप क्या सीख रहे थे? आप एक फ्रेम सीख रहे थे कि आप किस तरीके से किसी भी चीज को डिजाइन करते हैं. Like आपके माइंड में कोई भी थॉट डेवलप हुआ and then you have to design that kind of structures, right? But right now we will move on to the next phase, and that is what we will prepare that kind of structures by the help of we can easily do any task. अभी हम उस फेज में मूव कर रहे हैं जिसमें हम अपने टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं. इस तरीके की कोई मशीन हम प्रिपेयर करेंगे. अब इस मशीन में अगर आप बहुत ध्यान से देखें, द अपर पार्ट एंड दिस मशीन, दिस इज कॉल्ड EV3 मशीन, एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस यू कैन परफॉर्म एनी टास्क बिकॉज इट इज कंप्लीटली अ कंप्यूटर, a short computer, small computer. ये बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह काम करेगा. इट मींस जो भी आप प्रोग्राम करेंगे, जो भी आप टास्क इसको देंगे, वो सब इस माइंड में सेट हो जाएगा, राइट? और फिर ये आपकी मशीन मूव करेगी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस. फाइन. So that means आज हम इस तरीके के स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करने जा रहे हैं जिनके थ्रू हम कोई भी टास्क परफॉर्म करा सकते हैं. तो वो अब यहाँ पर मैटर करता है, मेन मैटर, दैट इज EV3 मशीन विच इज अवेलेबल हियर. आप किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर्स के साथ, किसी भी डिजाइन के साथ अगर इसको अटैच कर देते हैं, देन यू कैन परफॉर्म योर टास्क, बट बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, एंड इट इज द नेक्स्ट लेवल. सो बिफोर दैट वी विल डिजाइन. We will learn how to design, right? So let's start, and you know very well what are the process for that. The process is simple. First of all, you have to open the LDD platform, right? And you know very well what are the steps.
Firstly, you have to go on start button, and after that you will find out the Lego Digital Designer. So just click on that, and then you will easily launch LDD application. And after that, you will create a fresh file or fresh project where you can design the structure. Am I right? So I'm just click on this free build option for creating a fresh file. So just click on that, and now you can see the interface where you can easily create this particular structure. So let's begin. Okay, so let's start. And you know very well, we need to follow some steps. By the help of these steps, you can easily create the same structure which is available in image. Okay, so let's start. So I'm going back on my LDD platform, and first of all, I would like to set the theme, because this structures totally depend on Lego Mindstorm, right? इसमें आपको सारे Lego Mindstorm के parts use करने पड़ेंगे. LDD parts में ये parts सारे available नहीं होंगे, so you have to change the theme. So first of all, I would like to change my theme, and the steps are easy. First of all, you have to go on view option, just click on that, and after that just click and choose new theme, and where new theme is available, that is Lego Mindstorm. So just click on that, and now you can see the theme has changed. You can see here Lego Mindstorm in place of LDD, Lego Digital Designer. So now you can easily create this design. आपको यहाँ पर सारे parts available हो जाएंगे. Otherwise आप find out करते रहेंगे parts को, और वो आपको कोई result found नहीं देगा. It means कोई result show नहीं करेगा, right? So let's start. First of all, I would like to find out the main important part of this structure, that is engine. I'm just typing here engine. Now you can see the particular folder has opened, and now you can expand by the help of this plus symbol, and you will receive the exact part, right? You will receive the exact part, that is engine. Okay, so just take it and now drag your mouse. You will receive this engine on your work plane area. You can see. So this is what? This is engine. अगर मैं आपको वापस से आपकी इमेज शो करती हूं तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, इजीली रेक्टिफाई कर लेंगे where this engine is available. Here it is. You can see this is the engine, correct? So you can take it and now move on to the next part. And in next part, you need very simple part, that is connector peg. So take it, just remove your cancel last search, cancel this last search, and now you have to type in search box connector, because आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आप जो स्पेशल पार्ट्स हैं जिनमें आपके होल्स अवेलेबल हैं उनको आप कनेक्टर पैक के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? Just expand your folder, and now you will receive lots of connector pegs are available here. But right now I want to take this long blue color connector peg. So just take it, just click on that, and now where I want to set it, I want to set this one here. ये देखिए, the long side of this connector peg is outside, and the small side of this connector peg I will put inside. Okay, in this way. Now move on to the next step, and in next step I need a very important part, that is
angular beam. What is it? Angular beam, and its size is 3/7. So I just close this search, and right now I'm typing here angular beam. Just expand your folder, and now you will receive a lots of angular beam are here in various sizes. So I would like to take 3/7 angular beam. So I will take this one. And now you have to change the direction. You have to change the direction. Like this. आपको इस पोजीशन में इसको सेट करना है. And then you have to set like this. Right? This is the actual way to assemble. You can see. Now, I would like to take one more connector pack. So what should I do? What should I do? Can I search again? Yes, I can, but I don't want to search. मैं कर सकती हूँ, but करना नहीं चाहती हूँ. Right? Reason is what? Because I have the most powerful tool. That is what? That is clone tool. And by the help of clone tool, I can easily create a duplicate of this connector pack. So no need to take time for creating this design, right? So just click on that. And after that, just click on this clone tool. And then you have to click on that part, which part you need next copy. So take it, drag your mouse, and now you will put where you want to put it. So I want to put here. But I need small part. It's long. So I don't want to this. Yes, one more thing. One more thing is here. So no need to take this one. You can see this is a plus symbol. यहाँ पर क्या है? प्लस सिंबल है, बट मेरे कनेक्टर पैक में राउंड शेप है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असेंबल हियर. ये यहाँ पर असेंबल होगा ही नहीं. सो यू हैव टू क्लोज दिस सर्च एंड नाउ यू हैव टू टाइप कनेक्टर पैक. Right, and now you will take this connector pack cross section. Right, अब देखिए यहाँ पर, अब आपको नॉर्मल कनेक्टर पैक नहीं लेना है, अब आपको लेना है कनेक्टर पैक क्रॉस सेक्शन. यू कैन सी. अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर आपके पास क्या है? प्लस सिंबल है. एक साइड आपका राउंड शेप है, एक साइड आपका प्लस सिंबल है. तो दैट मीन्स आप जहां भी प्लस सिंबल है वहां पर इस प्लस सिंबल को इजीली कनेक्ट कर सकते हो. राउंड शेप यहाँ पर कनेक्ट नहीं होगी, इसीलिए ये वाले जो पार्ट थे हमने कैंसिल कर दिए, इनको हम नहीं ले रहे. राइट, इनके थ्रू हम इसको असेंबल नहीं कर पाएंगे. सो जस्ट टर्न इट लाइक दिस एंड नाउ यू हैव टू पुट हियर इन दिस वे. इजीली कनेक्ट हो गया. राइट, ये देखिए. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. And in next step, you need one cross axle, right? आप sorry, connector pack ही आपको चाहिए. Same one, same connector pack आपको लेना है. So you can take it by the help of clone, or you can take from here also. So I would like to take from here, and I want one more, so I can take it, right? And now I would like to set in this way. Okay, no need to take this part. You will take one more part, that is cross axle. You will take what? You will take cross axle. Yes, it is useful for me. So right now its size is 3M. Students, its size is 3M, but I want 4M.
बिकॉज मुझे इक्वली सेट करना है दोनों साइड. सो आई विल टेक दिस वन एंड जस्ट पुट इट हियर. It is useful for me and I can easily connect. You can see, right? Because दोनों साइड आपका यहाँ पर क्या है, प्लस सिंबल है. Here you can see. और यहाँ पर आपको इजीली यहाँ पर ये क्रॉस कर जाएगा. So you have to put this cross axle here in this way. Equally आपको इसको सेट करना है. ये देखिए, right? Correct? And now I would like to move on next step. And in next step, you need cross axle extension. What is the part? Part name is cross axle extension, right? So you can take from here this one. Cross axle block में ही आपको ये मिलेगा. That is cross axle extension. So just take it and just put it here like this. Right? I'll show you. So this is the actual way to assemble the parts. And now move on to the next step. And in next step, you need one long blue color connector pad. And right now, I am very happy कि मैंने अपने पार्ट को डिलीट नहीं किया था. एक्स्ट्रा पार्ट्स मेरे स्पेस में है, बट मैंने उसको डिलीट नहीं किया. मे बी मेरे को आगे रिक्वायरमेंट में नीड हो, राइट? सो अभी नेसेसरी हो गया, अभी मेरे को उसकी नीड है. सो आई कैन टेक फ्रॉम हियर. सो नो नीड टू फाइंड आउट अगेन. My part is available on my work plane area. I can take it easily. So just click on that and now put it here. Yes, in this way. Right? Now move on to the next step. And in next step, you need one more connector pad. And again, it is long blue color connector pad. My requirement is again long blue connector pad. So I have already. I have, right? So I can take it and now I will put here in this way. Yes. Now I need what? I need black small connector pad. Right now अभी मुझे क्या चाहिए? ब्लैक स्मॉल कलर का एक कनेक्टर पैक चाहिए, जो कि अभी मेरे पास यहाँ पर ना तो मैंने अभी तक यूज किया है और ना ही अवेलेबल है मेरे वर्क प्लेन एरिया में. तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी मुझे वापस से फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? सो आई एम जस्ट सर्चिंग black color connector pack. So just close this cross section search. And now I would like to type here connector pad. Yes, black color connector pad is here and this one is small. So I can take it and I will put here. Firstly, you have to change the direction and then you have to put here in this way, right? आपको इस तरीके से इसको सेट करना है. And now I want a very important part, that is Technic angular beam. What is the part name? Technic angular beam. So I'm just typing here Technic angular beam. Yes, these all are the Technic angular beam. And right now, what is the size of this Technic angular beam? 3/5. Yes, so I want to take this one and I will take this gray color connector Technic angular beam, but right now I want to change the direction, right? So like this. Yes, this is the actual position, right? You can see. अभी आप सोच सकते हैं ये 3 साइड है, यहाँ पर 3 होल्स है और हमने 3 कनेक्टर पैक्स यूज किए हैं. सो फॉर दैट वी नीड टू सेट दिस हियर, राइट?
तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको यहां पर सेट करना है. सो आई विल पुट लाइक दिस, यू कैन सी, देख पा रहे हैं. तो अभी मैं आपको वापस से इमेज शो करती हूँ एंड नाउ यू कैन सी आप ये वाला पोर्शन प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस पोर्शन, ये देखिए, राइट. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, and in next step you need again one black color connector pad. So no need to find out again, just do clone, right. आपको क्या करना है, क्लोन करना है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप क्लोन टूल पर क्लिक करेंगे and then you have to click here, this is the connector pad, black connector pad. आपको यहीं पर क्लिक कर देना है and then drag your mouse, you will receive the same duplicate copy of this particular connector pad, right. And then you have to put here like this, आपको इसको यहाँ पर इस तरीके से पुट करना होगा. आई विल शो यू द एक्चुअल पोजीशन, हियर इट इज, ये देखिए, फाइन. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, and in next step you need again one more connector pad, and again its size is black, sorry, color is black and size is same. So you have to clone once again, just click on this connector pad, drag your mouse and you have to set here, right. You have to set here, correct. You have to set here like this. Now I'm going to move on the next step, and in next step you need a very important part, that is क्रॉस एक्सेल. once again you need क्रॉस एक्सेल. आप यहां से भी इस क्रॉस एक्सेल को यूज कर सकते थे गाइज, बट the condition is this is 4M cross excel and right now I want 8M cross excel. It means double size का मुझे cross excel चाहिए. So you have to search. So first of all close this search and now you have to type here cross excel. And now you will search 8M cross excel, and it is not simple cross excel, it is stop cross excel, it is single cross excel. I want to cross excel but with stop end, it means uska ek end stop hona chahiye. I'll show you the difference between both cross excels. देखिए ये cross excel है आपके पास and its size is 8M, right. And I will take again another cross excel like this one. देखिए दोनों क्रॉस एक्सेल्स में क्या डिफरेंस है, आई शो यू बाय इंक्रीजिंग द, बाय मैक्सिमाइजिंग. यू कैन सी हियर, यहाँ पर दोनों एंड्स ओपन है, ये देखिए. लेकिन ये वाले क्रॉस एक्सेल में ये वाला एंड ओपन है बट ये वाला एंड आपका क्लोज है. यू कैन सी, राइट, दिस एंड इज क्लोज. सो यू विल टेक दिस वन, बिकॉज आपको क्या करना है, इसको यहां सेट करना है बट इस साइड से ये क्लोज होना चाहिए, अदर साइड ओपन. सो जस्ट टेक इट एंड जस्ट पुट इट हियर लाइक दिस. Just do this task in a very careful manner. Yes, now you can see, right. ये देखिए अदर साइड आपने इसको यहाँ पर ओपनली यूज कर लेंगे. After this cross sectional you need 3M technique beam. It means उसका साइज क्या होना चाहिए, 3M, और वो क्या होना चाहिए, टेक्निक बीम. पार्ट नेम इज टेक्निक बीम. सो यू हैव टू राइट हियर टेक्निक beam, and now you will receive 3M size technique beam. Its size is 3M, right. So you will take this one and after that you will change the direction
like this, and now you will set here. ये देखिए, now you will set here, correct? Is it clear? ये देखिए, आपको इसको यहाँ पर सेट कर देना है. Now in next step you need Technic angular beam. आपको क्या चाहिए? Technic angular beam, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. टेक्निक एंगुलर बीम हमारा ऑलरेडी ओपन है. दिस इज 90 डिग्री टेक्निकल एंगुलर बीम, बट राइट नाउ आई वांट 4x4 technic angular beam. So I'll just search it. Yes, this one is technic angular beam and its size is 4x4. So I can take it, and after that I will use connector packs. Right? मुझे कैसे connector packs चाहिए? Cross axle वाले. So which is also available in on my work plane area. I will take it. I'll just put like this and just put it here. Right? First of all, you have to change the direction of this technic angular beam like this, and then you have to set this technic angular beam like this. And now where you have to put? You have to put here. Here, right? तो अभी यहाँ पर ये दो पार्ट्स हैं, so you have to use multiple selection, because अगर आपने सिंगल सिलेक्शन यूज किया स्टूडेंट्स, तो आपका एक सिंगल पार्ट मूव होगा. देखिए कैसे. इट मीन्स आपका कनेक्टर पैक वहीं पर रह गया. सो फॉर दैट व्हाट शुड आई डू? सिंपली मुझे क्या करना है? आई हैव टू यूज मल्टीपल सिलेक्शन टूल and just click on first part first of all, and after that click on another part. Now you can see all parts are selected. Now you can easily move togetherly. Now you can easily move both parts togetherly, and then you have to set where you want to set it. I want to set here like this. Correct? I'll show you the complete structure. Right? I'll show you the image first, because आपको exact feeling आ जानी चाहिए कि हम ये सब prepare कर रहे हैं. ये देखिए, this is the complete structure which we have already done. Right? ये portion हम ready कर चुके हैं. Now move on to the next step. And in next step, you need a very important part, that is beam frame. That is simple. That is beam frame, right? So I'll find out. First of all, I have to move on my work plane area, and after that I will type here beam frame, which is totally new. अभी तक हमने यहाँ पर use नहीं किया है. Yes, this is beam frame and its size is 5x7. I will take it, I will change the direction, and then I will put where I want to put. But before that, I have to prepare this structure. And right now I want to delete 2 or 3 parts. I want to delete it. Oops, sorry, undo my task. And right now I want to delete what? I want to delete this part, right? वो by mistake मैंने beam frame को delete किया, तो I can do undo. Okay, I can take my last action by the help of undo. Okay, now I would like to select single selection, and I need what? I need small black color connector pad, and which is available here. So I can do clone. What should I do? I do clone, right? I just click on clone tool, and then just click on this black color connector pad and just do like this. आपको direction change करना है, and then you have to put here. Okay. Now you will set one more pin here, one more connector pad here. So just do clone, drag your mouse and just put it here. And then you have to change the direction.
आपको क्या करना है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर देना है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टॉप क्लोनिंग, कनेक्टेड सिलेक्शन टूल का यूज कीजिए, एक ही पार्ट पर कलेक्ट करेंगे और आप एक ही पार्ट पर क्लिक करने पर सारे पार्ट्स एक साथ टुगेदरली सिलेक्ट हो जाएंगे एंड देन यू कैन टर्न इट लाइक दिस, right? And now you have to set what connector pair cross axes जो कि आपने यहाँ पर यूज किए हुए हैं. So you can do clone from here. You need two same parts. Yes, and now you have to put like this, right? In this way. Stop cloning. सिंगल सिलेक्शन की हेल्प से आप इसको सेट कर सकते हैं इजीली. Okay, just change the direction like this. And now you have to use cross blocks. आपको क्या यूज करने हैं? Cross blocks. This is again new part, right? Cross blocks, yes, the cross blocks are here, so you can take it. So you can take this one, and now you have to try to set. No, this one is not okay. I'm not satisfied with this. Yes. So this is the this one I want. This one I want. Yes, this is the cross block. So I want to take this one, and now you have to change in this way. आपको इसको इस तरीके से सेट करना है. Okay, so you have to set in this way, and you will take it. Okay, first of all, delete all the rest parts. And I want to take another again. Yes, now you have to set in this way, and now you will put here. अब आप easily इसको वहां set कर सकते हैं. Just do connected selection tool, and now you will put like this. This is the actual position, right? So you can take one more. You can take one more, and now you have to change the direction. Yes. And now you will take from here, put like this, and after that you have to use connected selection tool, and then you will put here. Yes, this is the actual position, guys. And now where I want to set this, अभी मैंने इस prepare कर लिया है, अब मैं इसको कहाँ set करना चाहती हूँ? It is very important, right? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें अदर साइड लेके जाना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे स्क्रीन को, राइट? एंड देन we will use connected selection tool. Just click on single connector pair and just take from here to here, right? And where I want to set, इसको मुझे कहाँ सेट करना है? इसको मुझे बहुत केयरफुली यहाँ सेट करना है, यहाँ पर. तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कनेक्टेड सिलेक्शन टूल का यूज करना होगा, एंड देन आई कैन यूज लाइक दिस. नाउ यू कैन सी, राइट?
I'll show you the image right now कि हमने कितना स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया है. ये फ्रंट साइड और ये वाला पोर्शन which we have done today, right? And tomorrow we will prepare the other side. Okay? I hope it is clear. You can see.